functions of the parasympathetic nerve supply of the stomach, which is basically contributed by the anterior and the posterior vagal trunks, right? So क्या function होंगे जी? It will be the constriction. That will be the secretomotor to the gastric glands. So gastric glands की जो secretion है वो उसके लिए your parasympathetic nerve supply is required, right? So the secretomotor to the gastric glands. Number 2, it is motor to the muscular wall of the stomach. ठीक है ना? Pylorus के लिए motor fibers they were coming from the sympathetic one, whereas the rest of the muscular wall it is got its motor supply from the parasympathetic vagi, right? And of course अगर वो इसके लिए मोटर हैं तो they will be inhibitory for the pylorus. ठीक है ना? रेसिप्रोकल है ना? सिंपैथेटिक जो है दैट इज मोटर टू द स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाकी मसल रिलैक्स कर जाएगा सो दैट के इट इज गोइंग टू so that the contents of the gastric contents should not move to the duodenum. ठीक है? और if the parasympathetic there is a parasympathetic stimulation तो क्या होगा? The rest of the muscle will contract and the pylorus will become relaxed so that the contents of gastric contents should be pushed into the duodenum. Is it clear? सर ये पॉइंट समझ नहीं है बेटे. मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम जो फाइबर्स आ रहे हैं वो गेटर स्प्लैंकनिंग के थ्रू आ रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम द विगाई. यहाँ तक बात क्लियर है? जो सिंपैथेटिक सिस्टम है these are the vasomotor fibers, number 1. Number 2, these are the motor fibers, these are the motor control for the sphincter. ठीक है? जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मोटर का क्या मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द मसल बिकम रिलैक्स. ठीक है? इसके जो फाइबर्स हैं वो बाकी मसल को रिलैक्स कर देंगे. ठीक है? इज इट क्लियर? और सो दैट द कंटेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक रीजन दे शुड नॉट एंटर इनटू द ड्यूडेनम. ठीक है? ओके. और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका फंक्शन इससे ऑपोजिट होता है. पैरासिम्पैथेटिक जब वेगस आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है तो आपका जो गैस्ट्रिक है मसल्स वे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा. इसके ऊपर इसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम का कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है? ये रिलैक्स करेगा और द कंटेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक द गैस्ट्रिक कंटेंट्स दे विल लीव द स्टमक एंड दे विल एंटर इनटू द duodenum. ठीक है? तो इन दोनों का जो एक्शन है वो इनवर्स है. अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ. सिंपैथेटिक सिस्टम आपको किस वक्त स्टिमुलेट होता है? ठीक है? बताएं. व्हेन योर सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क्स, जब कोई किसी चीज की इनहिबिशन करवानी नहीं बेटे, दैट इज बेसिकली फ्राइट एंड फ्लाइट. ठीक है? फियर. ठीक है? उस वक्त क्या होता है? You have, for example, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि if you are going into the forest और वहाँ कोई शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है? You will just run ना. ठीक है? उस वक्त आपको खाने पीने का ख्याल नहीं आएगा, राइट? और कोई फंक्शन इसका नहीं होगा. तो जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है ना तो दैट इज इन द इमरजेंसी कंडीशंस. ठीक है? उस वक्त आपके जो स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाते हैं और आपकी एनर्जी जो आपकी ये डाइजेशन प्रोसेस और इस तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हो जाते हैं और आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो आपके फर्निश हो जाते हैं. जो आपके मसल्स की तरफ मूवमेंट, मसल्स आपकी ब्लड फ्लो जो आपके वो मसल्स की तरफ हो जाता है सो दैट यू कैन रन, यू कैन सेव योरसेल्फ. इज इट और नॉट? ऐसे ही होता है ना? तो उस वक्त ये स्फिंक्टर्स क्लोज कर जाएंगे. जो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव होगा आपके स्फिंक्टर्स जो हैं दे विल बिकम क्लोज्ड. तो आपका ये पाइलोरस क्लोज कर जाएगा. और जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हैं उस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, राइट? व्हेन यू ईट समथिंग वो नॉर्मली डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट होने के बाद ये स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल पुश द कंटेंट्स. आपके स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे और द कंटेंट्स विल मूव फॉरवर्ड. इज इट क्लियर? ओके. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स क्लिनिकल्स अ बिट. ठीक है? क्लिनिकल्स में एक आम कंप्लेंट आती है जी गैस्ट्रिक पेन है जी. ओवर ईटिंग हो गई, गैस्ट्रिक पेन हो गया. ब्लोटिंग हो गई जी. ठीक है? आपने ओवरईट कर लिया तो किसी जी वो आम फैम में यूज जी गैस हो. तो दैट इज व्हाट बेसिकली, राइट? सो another important thing which is associated with the gastric pain especially that is the gastric ulcer, development of the gastric ulcer. I don't know that I have that picture or not. Just show you.
picture of testicles. Just wait picture. अच्छा, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में मुझे कुछ बताएं जी, आप में से कोई कंट्रीब्यूट करेगा जी गैस्ट्रिक अल्सर? What is an ulcer? How can you define the ulcer जी? Cohesion of the mucosa. Sir, injury to mucosal lining. Right. So it is basically a discontinuation. आपकी mucosal lining continuous होती है ना, right? So any discontinuation or wound in the your gastric mucosa, that is called as a gastric ulcer. And you can see this one. नजर आ रही है पिक्चर है आपको जी? Can you see this picture? मैंने भी चेंज किया बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Here you can see this is a internal aspect of the stomach, and here you can see this is a discontinuation of the, and it says there are a lot of causes for the gastric ulcers. ठीक है, क्या causes होती हैं जी gastric ulcer की? सर HCl बहुत ज्यादा रिलीज, HCl रिलीज ज्यादा कर जाए. ओके, क्यों कर जाए? ओवर ईटिंग आप जब करते हैं, when you Acidity वजह से. when you use a Mucus. spicy जो materials आप use करते हैं, right? और normally the normal site for the gastric ulcer development is ना, you see it is along the lesser curvature. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. Sometimes examiners used to ask कि जी what is the normal site development of the lesser curvature. ठीक है, तो उसमें क्यों ज्यादातर क्या होता है? The when you are going to use plenty of juices of the these colas sort of things. ठीक है, जैसे वो fluid यहाँ से आता है, right, it will run along this along the lesser curvature. The fluid जो है lesser curvature के साथ run करते हैं, right, so they are going to erode this surface. ठीक है, ये जो आप कोलास वगैरह पीते हैं ना, इसलिए you mustn't go for these carbonated drinks, right? The carbonated drinks is one of the most important cause of this gastric ulceration, right? And you see that's why this part of the lesser curvature through which the fluid flows, these are also called as the gastric canal, right? It is also called as a canal. Okay, so the most common site for development of the gastric ulcer is this canal region, that is along the lesser curvature. Okay, another thing which is just show you another important condition which is related with this one, that is the gastric carcinomas. ठीक है, gastric carcinomas. Okay, here you can see this one. The gastric carcinomas is any abnormal growth in the internal aspect of the stomach, right? And mostly the greater curvatures, these are associated mostly with these gastric carcinomas. ठीक है जी. And these gastric carcinomas, these are early detectable. You see, sometimes the patient comes to you and he is going to complain कि have feeling of fullness in my stomach. ठीक है, when I eat something, I just feel that I have eaten a lot, right? मुझे a feeling of fullness आ रही है, right? इसके अलावा sometimes he's going to complain about some sort of a pain in that region. And when you are going to examine that patient, if you have some doubt, you see, when the patient with the carcinoma comes to you, it feels very cachectic. Like he's also going to give the history. I am going to lose my weight. ठीक है, मैंने अपना कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा weight lose कर दिया, मुझे कुछ खाया पिया नहीं जाता, मुझे loss of appetite is there, right? And then he's going to complain of feeling of fullness, right? And then you are going to examine that patient. You can feel that their lymph node enlargement in the left supraclavicular, right? So आपका left supraclavicular lymph nodes आपको उसके enlarged feel होंगे, right? So this is a typical sign which and this is called as a Troyer's signs. ठीक है जी, Troyer's sign. ठीक है, Troyer's sign क्या होता है? The enlarged left supraclavicular lymph nodes, and is a typical sign for the confirmation sort of a thing for the gastric carcinoma, that the patient is suffering from the gastric carcinoma.
right? So it is very important, you must be remembering this one. ठीक है जी. इसके अलावा there are conditions which can lead to the pyloric obstruction, जिसमें आपको sympathetic problem मिलता है, pancreatic plexus की जो आती है. Well, you're not concerned much more with it. You must be remembering about these, the most important one, the gastric ulcer and the gastric carcinomas. ठीक है बच्चे, any problem till now? सर ये एक सवाल है सर. जी. सर ये जो बच्चे मट्टी खाते हैं इनका क्या होता है सर, स्टमक पे असर? Stomach, but normally there is a worm infestation basically. जो बच्चे मट्टी खाते हैं ना, मट्टी के साथ there are the the worm infestation जो है वो उसको हो जाती है. तो it can of course have the effect over the gastric mucosa. बाज बच्चे मट्टी नहीं खाते. The kids, they used to eat many more things, like they used to eat like तिनके नहीं होते हैं, straws, ठीक है, straw खाते हैं, कुछ लकड़ी जो है, they some, ये जो these are the different things, right? So of course they are going to affect their mucosa and can lead to this problem, like the erosion of the mucosa lead to the ulcers. And one more important, very important thing regarding the ulcers, that if you're not going to treat the ulcers, right? If अगर आप इन ulcers को properly treat नहीं करेंगे, तो the surface is going to become erodious, right? So the mucosa, then it will take away the submucosa, then it can erode the ACL or the other secretions. They're going to erode even the muscles, and even the whole wall of the whole thickness of the stomach. They can be have this effect. It can be eroded, and it can lead to the perforation. And when it will lead to the perforation, then it can it's a very dangerous condition, and then you should the patient will get peritonitis, and then you have to go for the surgical intervention, and you will perform the laparotomy, right? So this is a complication of the peptic or the gastric ulcers. If it remains untreated for the longer cases, in the chronic cases, chronic ulcers, they can bleed also, right? The patient often complains, I am going to pass the black stools. So the black stools means there is a blood, ठीक है ना? When this the blood is mixes with the acid, it turns black, right? So the patient complains of black stools. So there are a lot of complications of the ulcers. You must be remembering about all these things. ठीक है ना? If the patient comes to you with a history of burning, right, here in the esophagus and in the stomach region with pain, then again you can think of the gastric ulcer. If he's going to complain of the black stools, then it's dangerous. You can see that is the patient will come with this history of the black stool, and he will appear pale. ठीक है, वो बड़ा आपको क्योंकि blood loss हो रहा है, तो it will become pale, right? Okay, there is one more condition that is called as a hiatus hernia, right? Hiatus hernia is the normally the esophagus will enter past the diaphragm and is going to enter into the abdomen and is going to continue with the stomach, right? In hiatus hernia, what happens in hiatus hernia, this opening will become loosened or distended, ठीक है? और क्या होगा कि this some part of the stomach, it is going to leave this abdominal cavity and is going to enter through this esophageal opening into the thorax, right? So you see this opening is called a hiatus basically, right? Opening, hiatus is the word which is representing the opening, right? So ये hiatus hernia इसलिए कहलाता है कि इस opening में से the part of stomach is projecting upwards. That is called as a hiatus hernia. ठीक है? But there are a lot of causes for this one. ठीक है? इसके भी काफी causes हैं. Especially one of the is that you see oh, you're overeating, बहुत ज़्यादा खाएं तो you see the and so there are certain conditions in which this opening it will become so that the stomach can और congenital हो सकता है सर अगर congenital भी हो सकता है, congenital भी होता है. इसके अलावा बच्चे when there are the persons which are having the which is having the certain conditions, which is facing certain condition like the of the increased intra-abdominal pressure increase होगा तो क्या होगा, right? It is going to push this part of the stomach through this opening, ठीक है?
तो इन केसेस ऑफ द हैवी वेट लिफ्टर्स, और अब हर्निया की हम पढ़ चुके हैं ना बेसिकली हर्निया होता क्या, ठीक है। तो all those conditions which can lead to the other hernia, it also can apply to this one, like this hiatus hernia. जी कुछ पूछ रहे थे आप बेटा? सर इसोफेगस की अगर लेंथ भी शॉर्ट हो तो उस वजह से भी होता है। तो वो इस लेंथ शॉर्ट कैसे होगी? सर पैदाइशी हो सकती है। तो वो हम कह चुके ना कंजेनिटल। ठीक है, we are talking to, ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर जी? एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द स्टमक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके जी, देन